Good morning, students. Today in this video we will discuss about propensity to consume. Just recall our previous video, we have discussed about consumption function. So I hope you all are understood that. So from consumption function we will proceed towards propensity to consume. So propensity to consume is nothing but your consumption function. What does it mean? It refers to that portion of income which is spent on the purchase of goods and services at the given level of income. इसका मतलब टोटल इनकम से हम जितना पोर्शन ऑफ इनकम कंजप्शन कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट पोर्शन इज नोन एज propensity to consume. So as you know, consumption is the function of income because whatever we consume, that all are from our income. So this is the meaning of propensity to consume. Now come to the point, the types of consumption. So the types of propensity to consume. So there are two types of propensity to consume: average propensity to consume and marginal propensity to consume, APC and MPC. You can certainly name there. APC stands for average propensity to consume and MPC stands for marginal propensity to consume. So first come to the point, APC. APC, what does it mean? That it refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. It means the ratio of consumption expenditure, that is C stands for consumption expenditure, Y stands for income. So out of our total income, what proportion of income we use for our consumption, that ratio is known as what? Average propensity to consume, or APC. APC means it is the ratio of consumption to income. So let's take an example. If consumption expenditure is 70 crore. Let's take an example. If consumption expenditure is 70 crore at national income of 100 crore. इसका मतलब जब 100 crore national income था तब consumption expenditure था 70. But that means APC equal to C by Y, consumption by income. So 70 by 100 equal to 0.70. That is the 0.70 means it is the 70% of income is spent on consumption. Okay, if 100% is our total income, then 70% of income is spent on consumption. So 0.70 is the value of APC. Now this APC can be understood by using the schedule and a diagram. So let's see the table. So when income is 0, consumption is 40, and I hope you will be recall our last video. This 40 is known as autonomous consumption. Autonomous consumption means the level of consumption at जीरो लेवल ऑफ इनकम. जब इनकम जीरो होता है तब भी हम कुछ कंजप्शन करते हैं, तो दैट लेवल ऑफ कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन. सो हियर इनकम इन फर्स्ट फेज इनकम इज जीरो बट कंजप्शन इज 40. सो दिस 40 इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन. सो एपीसी इक्वल टू क्या होगा? सी बाई वाई. 40 by 0 is not defined, that is indefinite, so it is not defined. So come to the second level. As income increases from 0 to 100, our consumption also increases from 40 to 120. As you know, it is human psychology. As income increases, our consumption expenditure also increases. So as income increases from 0 to 100, consumption also increases from 40 to 120. Then ratio will be C by Y, 120 by 100, that is 1.20. And as income increases from 100 to 200, consumption also increases from 120 to 200, that is 1. It is procedure like this. As income increases, consumption also increases, and MPC will be like this. So focus this MPC column. Here the MPC will be more than 1 or less than 1. And in our previous video we discussed the value of APC. So here the value of APC may be more than 1 or may be less than 1, but never be 0. We will see in this. See in this diagram, OX-axis is income, OY-axis states that consumption. This is the consumption curve, and now see here consumption curve starting from Y-axis, not the center, not from the 0 point. It starts from Y-axis. Why? Because due to autonomous consumption. ड्यू टू ऑटोनोमस कंजप्शन. अगर इनकम जीरो है फिर भी हम कुछ कंजप्शन करते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन. सो कंजप्शन कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस. एंड लेट्स here
change in if you try to find out the value of APC, then APC equal to C by Y, consumption by income. So in this diagram, the proportion of consumption is due to OY is the consumption curve. Here consumption is A, Y1 is the consumption, and income, this is income curve of x-axis. So here income is O, Y1, O, Y1 is the income. So here C by Y, APC equal to C by Y equal to C stands for ON and Y stands for OY1. So this is the value of APC. Now come to the point. Here we discuss some properties of APC. Properties of APC means it is the very important points. Just remember, the first property is APC is more than 1. APC may be more than 1. Here in this table you can identify that APC is 1.20. It means APC may be more than 1. MPC कब तक more than 1 रहेगा? जब तक consumption is more than income. See here consumption is more than 1 income. Consumption is 120, income is 100. तो जब तक consumption is more than income, at that time APC will be more than 1. Second property is APC is equal to 1. APC equal to 1 कब होगा? When income is exact equal to consumption. Income 200, consumption 200. That means APC equal 1. Then APC is less than 1. APC less than कब होगा? 1. When consumption is less than income. Income जब income ज़्यादा हो जाएगा तब APC less than 1 होगा. So APC may be less than 1, more than 1 or equal to 1. Then APC falls with increase in income. APC falls. See here APC in first page APC 1.20, then 1, then 0.93, then 0.90. So APC is continuously decrease, fall as income increases. जब income increase होते जाएगा तब APC का value decrease होते जाएगा. And last property is APC can never be 0. APC कभी भी 0 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because due to autonomous consumption. Consumption कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकम कुछ है या ना है हम तो कंजप्शन करेंगे ही. सो ड्यू टू ऑटोनोमस कंजप्शन द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी 0. सो दिस इज ऑल अबाउट एपीसी एंड इट्स प्रॉपर्टीज. नाउ कम टू द सेकंड टाइप्स एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम. एपीसी में क्या था? ओनली द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम. बट एमपीसी में चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम. इसका मतलब इनकम में जितना प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है तो वो चेंज पार्ट से इनकम का जो जितना पार्ट चेंज हुआ वो चेंज पार्ट से कितना प्रोपोर्शन हम कंजप्शन कर रहे हैं उसी को बोलते हैं एमपीसी. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ कंजप्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 70 to 120. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कंजप्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 70 to 110. 70 था कंजप्शन, अभी क्या हुआ? 110 हो गया. तो अभी यहाँ पर कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ? 40. 70 था 110 हुआ. तो ये जो चेंजेस हुआ इसको बोलते हैं चेंज इन कंजप्शन, डेल सी. सो 70 था 110 हुआ तो डेल सी कितना हुआ? 40. तो ये जब कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 70 to 120, दैट मीन्स कंजप्शन कब इंक्रीज होगा? वन इनकम इंक्रीज होगा. जब इनकम बढ़ेगा तब हम कंजप्शन को बढ़ाएंगे. तब इनकम इंक्रीज हुआ है विथ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ 100 to 200. इसका मतलब जब इनकम 100 था तब कंजप्शन 70 था. जब इनकम 100 to 200 हो गया कंजप्शन इंक्रीजेस टू 70 to 120. दैट मीन्स हियर चेंज इन कंजप्शन हुआ डेल सी दैट इज 40 एंड चेंज इन इनकम हुआ दैट इज डेल वाई 100. 100 था 200 हुआ तो ये चेंजेस हुआ 100. वो 70 था 110 हुआ तो चेंज हुआ 40. सो दिस चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम, दिस रेशियो इज नोन एज एमपीसी. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द वैल्यू इज 0.40. सो 0.40 मीन्स 40% ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन. मतलब जितना परसेंटेज इनकम में इंक्रीज हुआ उसका 40% इनकम हम यूज़ किए किसके लिए? कंजप्शन के लिए. ओके. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एपीसी. नाउ कम टू द पॉइंट table and diagram. You can understand this by using table and diagram. So see here this table, same table we can repeat here. Income increases from 0 to 100, 200, 300, 400 like that. And consumption also increases 40, 120, 200, 280 and 360.
So as what we observe here, see here, as income increases, consumption also increases. So what is the change in consumption, change in income, so that we can identify the value of MPC. So see the first row, when income is 0, consumption is 40. So del C कितना हुआ, consumption कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है. डेल वाई इनकम में क्या चेंज हुआ. सो फर्स्ट वाइज में ये इंडिफिनाइट होगा, तो एमपीसी को छोड़ देना है. सेकंड रो में आओ, व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 100, एट द टाइम कंजप्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 40 to 120. सो व्हाट इज द चेंज, डेल सी कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, 40 था 120 हुआ. तो हियर द कंजप्शन चेंजेस बाय 80 एंड इनकम 0 था 100 हुआ, तो कितना चेंज हुआ, 100. So ratio will be change in consumption by change in income. Change in consumption 80, change in income 100. So 80 by 100 equals 0.80. So like this we will draw this table and come to the diagram. OY axis represent income, OX axis represent consumption expenditure. So as you know, consumption expenditure is always starting from Y axis in positive view. So CC is the consumption curve, and let's see point B and point A. At point B states that when income is OY1, consumption is OM. When income is OY2, consumption is ON. इसका मतलब when income increases from Y1 to Y2, consumption increases from M to N. So change कितना हुआ, Y1 to Y2, this is change in income. MN, this is change in consumption. So income था at point B, इनकम y1 से y2, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, y1 to y2, दिस इज द चेंज इन इनकम पार्ट. कंजप्शन कितना चेंज हुआ, m to n, दिस इज द चेंज इन कंजप्शन पार्ट mn. सो MPC इक्वल टू डेल c बाई डेल y, दैट इज mn बाई y1 y2. लाइक दिस वी फोकस हियर सम प्रॉपर्टीज ऑफ MPC. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ MPC वैरीज बिटवीन 0 to 1. 0 and 1, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ MPC ऑलवेज वैरीज फ्रॉम 0 and 1. इसका मतलब 0, द वैल्यू ऑफ MPC इज नेवर विल बी 0 और लेस देन 0. इट वैरीज फ्रॉम 0 to, इसका मतलब मोर देन 0 MPC एंड लेस देन 1. ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये once 0, the value of MPC is always lies between 0 to 1. If the entire additional income is consumed, that is del S equal to 0. entire additional is consumed, इसका मतलब जितना इनकम करेंगे अगर उसको सारे के सारे कंजप्शन कर लेंगे तो डेल एस क्या है, चेंज इन सेविंग क्या है, 0 होगा. देन द MPC विल बी 1. इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, देन डेल सी इक्वल टू 0. अगर सारे के इनकम हम सेव कर देंगे तो चेंज इन कंजप्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा. देन MPC इज 0. सो द वैल्यू ऑफ MPC इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. सेकेंड, MPC ऑफ पुअर इज मोर देन द ट्रीज. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ MPC ऑफ पुअर पीपल इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ रिच पीपल. व्हाई? बिकॉज द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड आर मोर देन ऑलवेज हायर ऑफ पुअर पीपल रादर देन द रिच पीपल. सो मैक्सिमम पुअर पीपल लोग क्या करते हैं, जितना भी इनकम करते हैं उसका ज़्यादा परसेंटेज वो कंजप्शन कर लेते हैं, क्योंकि सेविंग के लिए उनके पास पैसा बहुत कम बचता है. तो ज़्यादा इनकम को वो अपना कंजप्शन में एक्सपेंडिचर कर लेते हैं. सो इसलिए द वैल्यू ऑफ MPC ऑफ पुअर इज ऑलवेज मोर देन द वैल्यू ऑफ MPC ऑफ रिच. देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज MPC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम. इसका मतलब as MPC also falls with increase in income. As our income increases, the value of MPC always decreases. Okay, so this is all about the propensity to consume and its types. This is the a part of consumption function. So you write it in your classwork copy. Thank you.